बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट हमने सॉल्व किया था पहले एमसीक्यू से लेकर 50 एमसीक्यूज़ तक। आज हम 51 एमसीक्यूज़ से लेकर 100 एमसीक्यूज़ तक हल करेंगे। 51 एमसीक्यू है, इज़ अ बर्गलर इन हार्ट ब्रेक हाउस। हार्ट ब्रेक हाउस में बर्गलर कौन होता है? तो इसमें आंसर की के मुताबिक ऑप्शन है सी, मेजिनी डन, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। असल में ये करेक्ट ऑप्शन है बिली डन। ये बिली डन होता है। तो आंसर की के मुताबिक इसमें है मेजिनी डन, लेकिन आपने ये याद करना है कि ये बिली डन बर्गलर होता है। 52 वेटिंग फॉर गार्डो एग्जिबिट्स रिपीटिशन एंड। वेटिंग फॉर गार्डो क्या एग्जिबिट करता है? रिपीटिशन और क्या? मोनोटोनस ऑफ लाइफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, मोनोटोनस ऑफ लाइफ। 53 व्हाट हैज हैपेंड टू पोजो व्हेन ही एंड लकी रिटर्न ऑन द सेकंड नाइट। तो उसको क्या हो गया था? ही वॉज ब्लाइंड। पाजो को क्या हुआ था? और लकी को जब वो दूसरी रात आए तो ही वॉज ब्लाइंड। 54 अ बॉय कम्स एट द एंड ऑफ एक्ट एंड टेल्स दैट गॉडो इज नॉट कमिंग। तो गॉडो इज नॉट कमिंग। 55 they talk aimlessly, exchanging heads, share jokes too। ये सब कुछ काम क्यों करते हैं? kill the time, वक़्त को मारने की। kill the time, ताकि वक़्त गुजारे। 56 the boy confirmed that he works फॉर मिस्टर गॉडो एज अ। यहाँ पर ये सही दिखाई नहीं रहा तस्वीर में, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको समझिए। 56 है द बॉय कन्फर्म डेट ही वर्क्स फॉर मिस्टर गॉडो एज अ। तो क्या होता है वहाँ पर? गोतर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, गोतर। 57 एमसीक्यू है स्ट्रॉगन स्पेंड previous night hiding, lying in a ditch and receiving a beating from some assailant। यहाँ पर ये एमसीक्यू दिखाई नहीं, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन है डिच। यहाँ पर ये है डिच। 57 एमसीक्यूज कुछ इस तरह का है। A stray gun spent the previous night lying in a ditch and receiving a beating from some unnamed assailants। तो यहाँ पर आंसर है ditch। ये एक वेबसाइट से मैंने लिया है। 58 है when a stray gun complains he is hungry, Latimer gave him what? A carrot। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, a carrot। Latimer उसको क्या देता है? carrot। 59 है what does Lucky do when a stray gun tries to wipe the tears from his eyes। तो kicks him, उसको लात मारता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, kicks him। What of the following characters goes with the same Jenkins the caretaker। केयरटेकर में जिन के नाम किसका था? तो ये डेविस का था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, डेविस। 61 है was subject to hallucination and gave electric shocks in childhood। चाइल्डहुड में किसको इलेक्ट्रिक शॉक मिले थे और एलिसुरेशन किसको था?
तो ये और आस्टन को था, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी आस्टन। 62 द केयर टेकर इज कंसिडर्ड एज, ये एब्जर्व प्ले है, इसमें तीन कैरेक्टर है मेक, आस्टन और डेविस, तो ये एब्जर्व प्ले है। 63 व्हाई डज आस्टन वेक अप डेविस अप फ्रॉम द स्लीप वन नाइट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी टू आस्क हिम टू स्टॉप मेकिंग नॉइज इन हिज स्लीप, टू स्टॉप हिम to stop making noise in his sleep. 64 what kind of conversation is there between Mick and Austin in the play, यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता लेकिन मेरे साथ मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। What kind of conversation is there between Mick and Austin in the play, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है मोस्टली नॉन वर्बल, mostly non-verbal. 65 in long day's journey and tonight the mother excused her husband's unemployment has her feeling blue, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है her husband unemployment has her feeling blue. 66 what is Edmund actually dying of in the play, तो ये कंजम्पशन से मरता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। 67 जेमी द एल्डर ब्रदर इज accused of being all of the following things except what, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है being too naive, being too naive. 68 what happens in the final scene of long day's journey and tonight, तो लॉन्ग डेज जर्नी एंड टुनाइट के आखिरी सीन में क्या होता है, इसमें बी करेक्ट है मेरी कम्स डाउन स्टेयर्स विद हर वेडिंग ड्रेस एंड थिंग्स शी इज गोइंग टू बिकम अ नन, नन राहिबा को कहते हैं, वे एक राहिबा बन जाएगी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। 69 Edmund is shown how many years old in the play, Edmund कितना होता है प्ले में, 24 years old होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है 24। ये लॉन्ग डेज जर्नी एंड टू नाइट एक कैरेक्टर है। इज वन ऑफ उनील्स, ये उनील की क्या है लेटर ट्रेजिडीज में से है, लॉन्ग डेज जर्नी एंड टू नाइट ये लेटर ट्रेजिडीज में से है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 3 प्रोफेशनल के बारे में है, पेडागॉजी है। 71 है अ टीचर हु इज अनएबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स शुड, उसको क्या करना चाहिए, उसको एवाल्युएशन करना चाहिए, हिज हर टीचिंग मेथड, एवाल्युएट हिज हर टीचिंग मेथड, he should evaluate his her teaching method. 72 one of the purposes of introduction part of a lesson plan is to get what, to get about previous knowledge, to get about previous knowledge. 73 a teacher teaching technique of asking the questions in the class is to, asking questions किस लिए होता है, to attract students attention, student attention को attract करने के लिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। उस्ताद सवालात क्यों पूछता है क्लास में, तो इसलिए कि ताकि तलबा मुतवज्जे हो जाए, तलबा की अटेंशन को हासिल करने के लिए। 74 when the majority of students in a class are not performing in the class the teacher should plan many hands-on activities, what should the teacher do, plan many hands-on activities. 75
In which of the teaching method students are passive listener? तो ये किस में होता है passive listener? लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स आर पेसिव लिसनर, लेक्चर मेथड में होता है ऐसा। 76. Which is not the focal point of triangular process of teaching? तो इसमें सारी है, टीचिंग मेथड भी है, टीचर भी है, प्यूपल भी है, तो इसमें एक करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। 77. A teacher in the class should keep the pitch of his voice sometime low and sometime high. पिच कैसा रखना होगा? sometime low and sometime high. 78. A teacher develops teaching skills refers to. A teacher एक उस्ताद जो कि टीचिंग स्किल, टीचिंग महारतें हासिल करता है, इसको ट्रेनिंग कहते हैं, टीचर ट्रेनिंग। 79. The word management is derived from the Italian word manager. Manager, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। 80. In our examination structure, the identification of examination center is the responsibility of the. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? असिस्टेंट कंट्रोलर कंडक्ट, असिस्टेंट कंट्रोलर कंडक्ट। 81. The effective school environment is mostly affected by friendly environment. Friendly environment. 82. Which is not the type of communication channel? कम्युनिकेशन चैनल का कौन सा टाइप नहीं है? तो स्पीकिंग, लिसनिंग ये कम्युनिकेशन में आते हैं, रीडिंग और राइटिंग भी आती है, थिंकिंग और एक्टिंग ये कम्युनिकेशन चैनल में नहीं आते। थिंकिंग सोचना और एक्टिंग करना ये कम्युनिकेशन चैनल के साथ ताल्लुक नहीं रखती। 83. A national budget has two parts. नेशनल बजट की कितने पार्ट्स होते हैं? 2. इनकम और एक्सपेंडिचर। 84. Management is the art of knowing exactly what you want to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Who said this? ये किसने बताया था? F.W. टेलर ने। 85. The human elements of educational management include children, parents, teachers and other employees. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये सब आते हैं इसमें। सवाल ऐसा है, समझने की कोशिश करें। The human elements of educational management include, इसमें children, parents, teachers and other employees सब आते हैं, all of the above. 86. The material elements of educational management include, material elements कौन से होते हैं? Money ये भी है, buildings, building और दूसरा दिखाई नहीं देता, books and equipment ये इसमें all of the above, इसमें सब आते हैं। 87. Which of the following is an advantage of self assessment? सेल्फ असेसमेंट का क्या फायदा होता है? It promotes student efficiency and acquiring new skills. तो इसमें करप्शन सी ये सही दिखाई नहीं देता। 88 है an assessment that compares a student's performance to the performance of other students is referred to as, तो ये क्या होता है? norm reference assessment इसको कहते हैं, norm reference assessment। 89 a teacher, ये सही दिखाई नहीं देता, इसको छोड़ते हैं। 90 है which of the following is an example of a non-standardized assessment? non-standardized assessment का कौन सा मिसाल है? क्लासरूम क्विज क्रिएटेड बाय अ टीचर, ये नॉन स्टैंडर्ड है। क्लासरूम क्विज
क्रिएटेड बाय अ टीचर, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। 91 है व्हेन ग्रेडिंग सब्जेक्टिव आइटम्स, व्हेन ग्रेडिंग सब्जेक्टिव आइटम लाइक एसेज, which of the following is a common challenge for teachers? कॉमन चैलेंज असातिज़ा के लिए क्या होगा? मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी, ये कॉमन चैलेंज होता है ऐसे में, ऐसे कुछ करने में। 92 which of the following is an example of a rubric, ये rubric के बारे में मिसाल है, तो इसमें करप्शन है सी, a rubric that assign an overall score based on the impressions of the work, overall impressions of the work, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ये भी सही दिखाई नहीं देता। 93 है in which stage of the assessment cycle do educators set specific learning goals and objectives for students? तो ये प्लानिंग में होता है। 94 है it is not a cognitive process under Bloom's taxonomy, तो ये सब है, रिमेंबरिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, ये सब है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। 95 ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किन चीज़ों के मुतालिक है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस के मुतालिक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हैज़ लेवल, इसमें कितने लेवल हैं? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की 3 लेवल्स हैं, तो इसमें 6, 7, 8 ये ठीक नहीं है, नन ऑफ दीज। 97 द लोएस्ट लेवल एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज नॉलेज, लोएस्ट लेवल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कौन सा होता है? नॉलेज। 98 द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज एंड कंसेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद द लेवल एंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कंप्रिहेंशन के साथ ये ताल्लुक रखते हैं, दोबारा समझते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज एंड कंसेप्ट्स आर एसोसिएटेड with the level and Bloom's taxonomy, comprehension। 99 application of knowledge and skills from problem solving is involved in, ये application में होता है। और आखिरी MCQ है 100 the ability to disintegrate information into subparts occur in analysis, सब पार्ट्स में डिवीजन क्या होता है? एनालिसिस में इंफॉर्मेशन को हम डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसमें कुछ MCQs नज़र नहीं आ रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।